Evening. Good morning, Sunana. गुड मॉर्निंग सुनैना। Good evening है सुनैना का तो। हाँ, बहुत सारे लोगों का अभी इवनिंग चल रहा है। सुनैना का इवनिंग है, गुड शीबा मॉर्निंग। जो आज पढ़ रही है उनका इवनिंग है। बहुत Advanced सारे लोगों delivery. का गुड इवनिंग होता है इसमें। एवरीवन फ्रॉम Good यूएस एंड morning, कनाडा। Dipti ma'am. Good वेरी morning. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सो हाउ वाज द मॉर्निंग फुल मून दीप्ति डे बेटा। यस्टरडे? बहुत दीप्ति बढ़िया। बेटा गुड मॉर्निंग। कितने सुंदर लग रहे हो, चमक रहे हो। सो हम सब ने किया फुल मून स्क्रिप्टिंग, मेडिटेशन, एवरीथिंग, enjoying the full moon effect. Delhi was overcast, lots of clouds. It was raining yesterday all of day since evening till night. But then yes, the effect of the full moon is there. It's still there. आज भी है। मतलब आजकल सारे वो फेस्टिवल्स एक दिन से दूसरे दिन चल रहे हैं ना। So it's there till today, all of day. Today we have the full moon, so you can continue thinking good, thinking about your future, about your dreams. Script if you can write, because writing also gives rise to imageries in the mind. And so yeah, that is what is going to shape up our future. And the present also, of course, is going to be beautiful. So today we are on to our very last chapter, day number 28. And remember the magic. And this talks about adding certain more practices to what we've already been doing. मतलब अभी जो काउंट माई ब्लेसिंग्स और रिमेम्बर द मैजिक तो हम सब ऑलरेडी करते हैं। ये वाली जो प्रैक्टिस होती है, कभी अगर आप लिख के नहीं कर पाओ तो आप इसको बोल के भी कर सकते हो, वॉक करते करते कर सकते हो। मतलब कल की जैसे जो मैजिक रॉक में हम करते हैं, रात को पूरे दिन हम सोचते हैं कि पूरे दिन में क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, दिस वाज गुड, दिस वाज गुड, दिस वाज गुड। सेम थिंग वी हैव टू डू इन द मॉर्निंग ऑल्सो, अदर देन काउंट माई ब्लेसिंग। सो काउंट माई ब्लेसिंग कंटिन्यूज, वो प्रैक्टिस कहीं पे भी नहीं जा रही है। उसके अलावा आज हम जो कल सब कुछ हुआ उसके बारे में भी हम लिखेंगे। So that way we are just adding on a layer to gratitude more and more in our lives. So we will see, the more we do gratitude, the more we are going to see the effect of gratitude. जो ऐसे day 0 में लिखा हुआ है ना, if you practice gratitude a little, your life will change a little. And if you practice gratitude a lot, your life will change a lot. So we want to change our life a lot. We want to add a lot of meaning and value to our life as well. While at the same time, हमको fun and enjoyment भी करना है। Life पूरे time full of laughter and joy होनी चाहिए, है ना? That should be our affirmation, that my life is full of joy and laughter. My life has lots of luxuries and comforts. I enjoy the best of health. Using the word enjoy, that becomes a capital word for us. I'm enjoying my health. है ना? तो अगर ये करेंगे तो I have the best of health, ऐसे नहीं, I'm enjoying the best of health. So that definitely is going to add more meaning, more value and more happiness to our health, है ना? Enjoying health एक दूसरा लेवल का वर्ड होता है, और एक that I have very good health थोड़ा सा उससे कम होता है। So इसीलिए I'm enjoying the comforts and luxuries. I'm enjoying happiness so much in my life. I'm enjoying my relationships. I'm enjoying my health. I'm enjoying all the money that I have. Not that you're just having the money. And remember that, you know, when it comes to money frequency, money का एक wealth code होता है कि पैसा जब भी आप खर्च कर रहे हो, आप हमेशा ये सोचो कि मैं पैसे दे नहीं रहा हूं या मैं पैसे दे नहीं रही हूं, आई एम सर्कुलेटिंग द मनी. Okay, so when that word circulation comes when you're spending the money, then that means circulation मतलब circle होता है, circulate, circle. So it is derived from circle, so it is going from your pocket or wallet, but it is making a circle and coming back to you. And when it comes back to you, यो हमारे उपनिषद वेदा सब में लिखा हुआ है, that wealth always comes back to us multiplied. So we don't never fear. हमेशा पैसे दो, तो ये तो हमने सीखा ही है ना, ब्लेस करके देना है, कि जिसको भी दे रहे हो आप उनके घर को ब्लेस करो कि उनकी खूब बरकत हो रही है, खूब उनके मतलब बच्चे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, यू नो। और फिर वो सर्कुलेशन, पैसा आप सर्कुलेट कर रहे हो, आप दे नहीं रहे हो, तो आपको कभी वो वाली फीलिंग डिटैचमेंट की नहीं आएगी कि ओ मेरे पॉकेट से इतना था, 1000 रुपीज पड़े थे और मुझको 800 खर्च करने पड़े। खर्च वर्ड को अपनी डिक्शनरी से हटा दो,
ठीक है. So money is getting circulated. So if circulated the money, it is going to come back to us. तो जो एनर्जी जिस भी तरीके से, अगर आप रिलेशनशिप्स में भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस, अगर वो पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो जरूर आपके पास रिटर्न होके वापस आएंगे. सो ये बहुत जरूरी होता है कि किस फीलिंग के साथ हम दिन रात जी रहे हैं. ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड करना, बट पूरे दिन आप किस फ्रीक्वेंसी में रहते हो, कितना रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट हमारा लोगों के लिए है, मन में क्या चल रहा है ना, वो सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वाइल एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अपनी एडवांटेज लेने दोगे, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. आई मीन डोंट बिकम बुद्धू that anybody can just come and take advantage of you. Make people capable of handling things themselves. I always say that, you know, अगर किसी को बहुत dependent आप अपने आप पे कर देते हो, then you're not, this is a disservice to humanity. So don't let people become dependent. Let them own. तभी तो जब लोग आप मुझसे affirmations भी पूछते हो तो मैं बोलती हूँ ना, अपनी affirmation बनाओ, अपनी एफर्मेशन बनाओ और फिर ग्रुप में शेयर करो. देखो मेरे पास बैंडविड्थ नहीं होती है 7 बजे के बाद. अब तो मुझे जिम जाना होता है 7:15 बजे. आई हैव टू बी इनसाइड द जिम बिकॉज टाइम लिमिटेड होता है ना, क्योंकि फिर 9:30 हैव टू रीच ऑफिस. तो इस तरह से सो आई वांट all of us to make our own affirmations and then implement them, whatever it is. Of course आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, ये बहुत ही informal group है ना, like a family where nobody is judging anyone. Of course, like any point of time you want me to stop sharing it on YouTube, I can do that. I mean, if you have anything which is personal, anything that you want to ask that you don't want to ask globally on the YouTube, I'll switch off the YouTube and then you can of course ask. Because कभी भी होता है ना, एक क्वेश्चन कोई पूछता है तो 50 लोगों के आंसर्स मिल जाते हैं. हो सकता है उनके मन में भी ये वाली बात हो कि हमको ये पूछना है, तो फिर वो और लोगों को भी आंसर्स मिल जाते हैं उसकी वजह से. जैसे अगर आपने अपने लिए कुछ पूछा कि दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट डू आई नीड टू डू फॉर इट, you know, so that way. Like yesterday my sister was asking, so there is some exam she needs to clear for her Canada government. So she is a resident of Canada only, so like PR citizen of Canada. So in fact वो शुरू से आई थिंक जब उसकी शादी हुई है तब से वो पहले एमिरेट्स में रहती थी और फिर दुबई से रेलोकेट होके फिर वो आई थिंक 2005 से वो कनाडा में है. तो there was certain exam she needed to decode और वो बोल रही थी कि this I'm stuck in this area in my life. And so I just told her one thing. I said that okay, you just sit and write gratitude for all the jobs that you've had there, and for all the offices, for all the bosses, for all the colleagues, for all the money that you've got from Canada and about the country. I said you will crack it. You know, it is that simple. It is not at all difficult. So अब मेहनत हमको करनी पड़ेगी ना, और लेकिन अच्छे जोन में पूरे टाइम रहना ये बहुत जरूरी होता है. तो इस चीज को याद रखना है. ऑफ कोर्स हम बहुत स्क्रिप्टिंग, डेक्लेरेशन, मेडिटेशन, एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड बहुत हमने कल भी किया होगा क्योंकि फुल मून. मैंने तो बहुत सारा किया. आई लॉस्ट द काउंट ऑफ इट आफ्टर सम टाइम. 21 टाइम्स मैं लगातार लिखती जा रही थी, लाइक एक ही सेंटेंस को 21 टाइम्स. फिर एंड में मैंने स्क्रिप्टिंग की अपने 6 महीने की. सो यूटिलाइज दैट डे. सो खूब अपने आप पे जब मेहनत करते हैं तो बाहर की दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ती है. फिर थिंग्स कम सो इजीली एंड एफर्टलेसली बिकॉज लाइफ इज ब्यूटीफुल, इजी एंड एफर्टलेस, है ना. एंड अ टोटल सेलिब्रेशन एंड जॉय. जब लाइफ सेलिब्रेशन है तो लाइफ जॉय और सेलिब्रेशन इसीलिए होगी ना क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी है, रिश्ते अच्छे हैं, खूब पैसा है, तभी तो लाइफ सेलिब्रेशन होती है. तो वो तो अपने आप वो सारा बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो सब तो आ ही जाएगा. अगर आप ये अम्ब्रेला वर्ड आप अगर की वर्ड यूज करोगे, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, इसका मतलब सब कुछ बहुत मस्त चल रहा है आपकी जिंदगी में, है ना. सो ये आज का रिमेंबर द मैजिक चैप्टर का. वी विल जस्ट सी द इमेज हियर where there is a pathway. आजू बाजू बहुत अंधेरा है. वेल डजंट मैटर, हु केयर्स, बिकॉज जिस पाथ पे हम चल रहे हैं उस पे बहुत ज्यादा रोशनी है, वो पूरी इल्यूमिनेटेड है और इसी रास्ते से हमको आगे चलना है. और खूब मैजिक है अपने आसपास यूनिवर्स को, बस उसको कैप्चर करके उस पाथ पे चलना, यानी कि ग्रैटिट्यूड के पाथ पे चलना, चाहे कितने भी हालात डिफिकल्ट हो रहे हो. अगर हालात डिफिकल्ट हो रहे हो किसी एरिया में तो ये टुमारो वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो एंड वाले चैप्टर है, कि स्टेप अप द प्रैक्टिस. जैसे ही कहीं इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं, कुछ ऑब्स्टिकल आ गया है, आप लो जोन में जा रहे हो, स्टेप अप द प्रैक्टिस.
ठीक है, दैट मीन्स अभी 10 लिख रहे थे, अभी 25 लिखना शुरू कर दो। ऑप्शन ही नहीं है, ये करना पड़ेगा, चाहे ये बोल के करें, सोच के करें, लिखने का टाइम नहीं है तो कैसे भी कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ ब्यूटिफुल इट इज। सो हाँ जी, बिट्टी जी आप पढ़ रहे हैं? यस मैम। हाँ बिट्टी जी, आपके बारे में मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। जब मैं सौम्या के साथ थी अभी पुणे में, तो हम जब बाहर डिनर पे गए थे, तो वो मुझे बता रही थी, कहती हैं कि पहले पहले दिन मैंने यूट्यूब पे सुना था, ये वाला लिंक के थ्रू यूट्यूब पे सुना था सेशन, एंड आई थिंक सौम्या को ही बताना चाहिए। देन शी सेड कि पहले ही दिन फर्स्ट, उसके नेक्स्ट डे मुझे पता था कि आई हैव गॉट माय मेंटर एंड दिस इज द प्लेस टू बी। And then she joined the session and she said that मैं सुबह सुबह मैंने ऑन किया, मैं किसी को जानती नहीं थी, और बिट्टी जी ने मुझको बोला गुड मॉर्निंग सौम्या, एंड दैट वाज सो एम्ब्रेसिव कि उनके उस शब्द से फिर उसके बाद में कभी हिली नहीं हूँ। सो आपको पता नहीं होता है कि आप कितना किसी के लिए गेम चेंजर बन रहे हो, तो आप सौम्या के लिए गेम चेंजर बने थे उस टाइम। थैंक यू सौम्या, थैंक यू सो मच। मैं आपकी तरह ये अफर्मेशन आपने एक बार बताई थी कि आई टच द लाइफ, मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मैं आई एम टच द एनीवन्स लाइफ, द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन आई मीट। हाँ यस, या सो यू बिकम दैट डायमंड। थैंक यू And थैंक यू बिट्टी सौम्या। मेरी तरफ से भी, बिकॉज बिट्टी जी ऑन एवरी फेस्टिवल शी मेक इट अ पॉइंट, लाइक वो मुझे हमेशा विश करते हैं, मतलब लाइक अलग से भी जरूर मुझे विश करते हैं। कोई फेस्टिवल हो, कुछ हो, चाहे आज गुरुपुरब है, तो वो हमेशा मुझे विश करते हैं, मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी। तो आज आपने बात की तो आई थॉट मुझे भी इनको, मैं हमेशा थैंक यू पर्सनली बोलती हूँ, बट या मैं यहाँ पे भी बोलना चाहती थी, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड होता है, दिस इज ऑल्सो समथिंग, होल्डिंग somebody hands, if it, yeah, मैम so मैंने thank भी you ना for एक being- सेशन में सुना था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट, तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल अप्रिशिएट एवरीवन। Yeah, and see, you made so much of a difference. Yes ma'am. चलिए, let's start reading. Day 28. Remember the magic. That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles Dillint, writer and Celtic folk musician. Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why remember the magic is the most powerful practice, ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life, no matter what your desires are now and what desires you will have in the future. This magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up, and you go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday, and as you scan, the blessings will bubble to surface of your mind. You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment
Or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things, because it's not about the size of the blessings, it's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of blessings, and you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic, it was created for you. Magic practice number 28. Remember the magic. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. Second, remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Third, as you remember each one, simply say magic words, thank you for it in your mind. Fourth, after today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter or more detailed list and say why you are grateful for them. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best things that happened during the day. Yeah, thank you so much, Bitti ji. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. So this practice is adding on to what we are doing now. तो लेकिन हमको ये ऑप्शन है कि अगर हम इसको लिख के करना, so हम count my blessings तो रोज करेंगे, वो तो हमको करना ही है. That is till the last day of our life on this earth, we will have to do the count my blessings. Other than that, जो हमको ये वाली practice है कि कल क्या क्या, because इसमें लिखा हुआ है ना, every day is unique. Find the magic from your day. There's so much of a magic happening in our lives. इतनी अच्छी चीजें होती है. Even if somebody just gave a smile to us in the lift, या हम जा रहे थे और किसी ने लिफ्ट का बटन दबा के आपके लिए वेट किया,
just that simple act of kindness. Or it is that you got a nice parking place for your car, और आपने कुछ ऑनलाइन बहुत अच्छी सी आउटफिट या शूज ऑर्डर किए, या आपने अपने लिए कोई लिपस्टिक ऑर्डर की, या आपने कोई भी चीज लाइक अ टी शर्ट यू ऑर्डर ऑनलाइन, फॉर उस ऐप के लिए थैंक यू, दैट आपका मतलब एवरीथिंग इज जस्ट वन बटन अवे। पहले कितना टाइम लगता था, है ना, अगर कोई चीज शॉपिंग करना होता था तो आप अलग से टाइम निकालो, मतलब ऑफिस से आके फिर उसके बाद जा रहे मॉल, फिर 10 दुकानों पे जा रहे हैं। अब इतना इजी हो गया है सब कुछ, इट्स जस्ट वन बटन अवे। you're sitting in the comfort of your bed, inside your quilt, on your mattress, on your pillow, resting your head, and you're surfing 100 dresses, उसमें से आप एक ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। और वो भी सारे ऑर्डर्स, मुझे तो कभी फुल प्राइस पे कुछ नजर ही नहीं आया, इफ यू नोटिस्ड, है ना, सब कुछ में लिखा होता है एक्चुअल प्राइस दिस मच एंड ऑनलाइन प्राइस ये वाला है। इतना इतना सेल डिस्काउंट्स पे एवरीथिंग, जब ग्रोसरीज लोगों को चाहिए होती है, सो वो ब्लिंकिट से आ जाती है, बिग बास्केट से ग्रोसरीज आ जाती है। मतलब लाइफ हैज बिकम सो कंफर्टेबल, सो कन्वीनियंट। आई थिंक हम लोगों को बहुत सारे अपने एप्स जो हमारे फोन पे हैं, जिससे कभी हम कैब बुक कर देते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। सो एवरीथिंग, पीपल हु आर इन मुंबई, इनके ये एप्स होते हैं जो वहां पे जो ट्रेन होती हैं उसमें ट्रैवल करने के लिए भी वो ऐप से फटाफट बुकिंग करा देते हैं। मतलब उसके लिए भी अब कुछ नहीं करना पड़ता, पहले इतना होता था लाइनों में खड़े। सो लाइफ हैज बिकम सो कंफर्टेबल, लेकिन हमको किस डेप्थ पे देखना है, दैट वाओ दिस इज सो सिंपल एंड सो इजी। तो इस तरह से पूरे दिन भर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बहुत कन्वीनियंटली हमने यूज किया होता है। कहीं पे भी जाते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं, वो हम फट से अपना मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, टैब, लैपटॉप, किसी और ऑफिस में भी अगर आप जा रहे हो वहां पे चार्ज कर लेते हो। आई डू दिस अ लॉट इवन व्हेन आई गो टू द रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट में जो बार एरियाज, वहां पे इतने स्विचेस होते हैं, या जो डीजे एरियाज है, बड़े बड़े बोर्ड्स रखे हुए होते हैं, वहां पे जाके अपना फोन चार्ज कर लो। कहीं पे भी लाइक दैट, लाइफ इज बिकम सो इजी, है ना। सो ऐसी चीजें जो रोजमर्रा में हो रही हैं, जो पहले हम नजरअंदाज कर देते थे, वी वर नॉट इवन टेकिंग आवर अटेंशन टुवर्ड्स दैट साइड बिकॉज वी फेल्ट दे वर सो इनसिग्निफिकेंट। देयर इज नथिंग व्हिच इज insignificant. Everything, even that plate in which you're putting the food and eating, so we have to be grateful for that plate which is there, in which we keep the food and we eat and we nourish our bodies. To the food that we have, of course we know that we have to do it, to the little things, to the chair we sit so comfortably in and enjoy, to the bed that we sleep in, to the curtains which are there in the room, to the doors and windows which are there, to people around. I mean, there are so many people around that, that makes it so meaningful for us. Why do you even wear a nice dress or buy a nice dress? Because we want others to see it. सिर्फ अगर अपने लिए शायद करना होता तो हम इतनी मेहनत नहीं करते, कई बार ऐसा होता है ना। सो इस तरह से चीजें डिग करके निकालो, that we can be grateful for. Dig out more things, that you can think, even if it is like the smallest little thing, जिसको हम पहले नोटिस भी नहीं करते थे। तो हमको ऐसी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है ना। सो इस तरह से जब हम उस एनर्जी में रहते हैं, सो बिकॉज इट इज ऑल अबाउट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, सो उस एनर्जी में जब हम रेडिएट होंगे तो हम डेफिनेटली देखेंगे कि हमारी लाइफ में बहुत मॉन्यूमेंटल चेंजेस आने लग गए, बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली अच्छी चीजें निकालते हैं। जैसे अगर कोई कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट भी कर रहा है तो हमने अपना लेसन उसमें से लर्न किया, थैंक यू फॉर माई वॉइस, थैंक यू फॉर माई लाउड वॉइस, थैंक यू फॉर द कम्युनिकेशन दैट आई हैव। बस सिंपल। अब हमारा उस आर्ग्यूमेंट की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, वो आर्ग्यूमेंट प्लेजेंट नहीं था, दो लोगों के बीच हो रहा था, यू वर जस्ट ओवर हियरिंग इट, ओके, बट देयर ऑल्सो यू हैव फाउंड योर ओन ग्रेटिट्यूड, so you have transformed even that energy. आपने उस एनर्जी से अपने आप को अफेक्ट नहीं होने दिया, रादर आपने ऑपोजिट एनर्जी जनरेट की है अपने लाइफ से, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी तो जनरेट होती है लाइफ से, है ना, जनरेट करनी पड़ती है, हम जनरेटर्स हैं, जो जनरेट करनी पड़ेगी हमको। सो उस एनर्जी, और उसके लिए लगातार मेहनत करनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन आंख नहीं खुली, हमने नहीं किया, वो नहीं किया। आप देखोगे कि 3rd डे आपके डिपिंग जोन ज्यादा होने लग गए, because consistency is the only key to success. This is very, very clear. So when we are consistent, we will see that life's changing, because एनर्जी डिप होती है जब नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव एनर्जी में ताकत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो इमोशंस को इन्वोक करती है।
So that's why to not go in that zone and still find positivity amidst the worst of the circumstances is the way to get along, and this is what we have learned. So remember the magic practice हमारे लिए और आसान कर देगी, and all thanks to Rhonda Byrne that she's made it so easy for us to kind of take us from, of course, like counting my blessings से अब एक और practice add करके, और वो ये कह रही है कि ये आप बोल के कर लो, मन में कर सकते हो, out loud कर सकते हो, किसी दिन जब टाइम होता है तो आप रीजन के साथ कर सकते हो, दैट ये हुआ बिकॉज ऑफ दिस, क्या लाइक बिकॉज ऐड करके, दैट आई एम सो ग्रेटफुल दैट you know my pantry boy made such a nice coffee for me yesterday which was so tasty and so refreshing. So that way तो मैं because भी add कर दिया, not just he made a coffee, because it made me feel so refreshed and you know it was so delicious. So that way, so छोटी छोटी चीजों के लिए जब हम ऐड करेंगे ये सारा ग्रैटिट्यूड ढूंढ ढूंढ के कुरेद के निकालना पड़ेगा, है ना, बट माइंड अब बहुत आराम से वहां पे जाएगा. जब शांत दिमाग होता है तो बहुत ग्रैटिट्यूड को डिक कर लेंगे, जब दिमाग अशांत होता है तो उसको शांत करो, पहले सिर्फ थैंक यू लिख लिख के या ग्रैटिट्यूड वॉक करके, है ना. और ये इस तरह से जब हम करेंगे तो इट वुड रियली स्टार्ट मेकिंग अ डिफरेंस टू द एट द क्वांटम लेवल, सेल्यूलर लेवल पे हमारे वो चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, एंड देन लाइफ बिकम सो ब्यूटीफुल. सो बस ये प्रैक्टिस हमको ऐड करनी है. और शुरू में जो कोट है, देयर इज मैजिक ऑल अराउंड इन द वर्ल्ड, you know, so we have to identify it, or else we will just keep living our life in vain. And you know, पहले जैसे रहते थे, as such anchor नहीं था, direction नहीं था. For the longest time maybe we were like that ship which is sailing on the sea waves. जब sea waves high हो रही हैं तो ship भी high जा रही है, जब sea waves इधर उधर हो रही हैं, like बहुत turmoil हो रहा है, तो वो ship भी अपने आप को hold नहीं कर पा रही है. उसके बाद हमको जिंदगी में इन बुक के फॉर्म्स में हमको वो लाइट मिल गई है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, शिप को दिखाने वाली जो लाइट होती है, लाइट हाउस से जो निकलती है ना, हर बार लाइट हाउस होता है ऐसी जगहों पे जो समुद्र के किनारे जो सिटीज होती हैं, तो वो लाइट हाउस से एक स्ट्रेट लाइट निकलती है रात के टाइम, जो शिप को रास्ता दिखाती है कि इस रास्ते पे जाओ, एंड देयर इज अ लैंड हियर, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, एंड दैट इज हाउ दे कोऑर्डिनेट. सो हमको भी तो लाइट हाउस मिला हुआ है ना इन बुक्स के फॉर्म में, तो हमको डायरेक्शन पता लग गया कि किस रास्ते पे जाना है. जब भी गिरते हैं तो हमको इतने ब्यूटीफुल टूल्स मिले हुए हैं दैट हाउ टू कम अप अगेन. हमको ये पता है कि अगर सिचुएशन खराब हो रही है थोड़ी, तो उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, बिकॉज अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना होता है. वी डोंट हैव टू फिक्स द थिंग्स आउटसाइड आवर लाइफ, है ना. एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड अदर्स टाइम, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनर्जी. रिस्पेक्ट अदर्स टाइम, सबका अपना टाइम है ना. प्रिया का भी अपना टाइम है, बार बार उसको एक्सपेक्ट करना वो ये कर दे, वो ये कर दे, अब वो ऐसे कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता. मैं भी अगर कुछ प्रिया को बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कोई जल्दी नहीं है, आराम से ये वाला टास्क है, अगले 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आप ऐसे कर लेना. सो आई डू दैट अ लॉट, you know, like, so you can't expect anyone to be at your service all the time. Okay, so nobody, like not even people in your house, they cannot be at your service all the time. We have to be independent in every which way. That independence is what we need to get. Can't expect her that she'll keep doing all this. हम गलती करते जा रहे हैं और वो उसको वॉश करती जा रही हैं, हम गलती करते जा रहे हैं, वो उसको वॉश करती जा रही है. This is not her job. She's just doing it out of goodness. So let's not take advantage of that also. ठीक है. So respecting others time, ये सारी चीजें भी इसी एनर्जी में आती है, बिकॉज कर्मा आप लगातार क्रिएट कर रहे होते हो. गुड कर्मा बैड कर्मा लगातार क्रिएट कर रहे हो. अगर गुड कर्मा किया है, गुड कर्मा की एनर्जी जब जाती है तो वापस वो मल्टीप्लाई होके आएगी. अगर हमने बैड कर्मा किया है तो वो वाली एनर्जी भी जाएगी, वो मल्टीप्लाई होके वापस आने वाली है. ठीक है. तो इसलिए हमको थोड़ा सा और माइंडफुल हो जाना चाहिए, मोर सिंसियर टुवर्ड्स द वे वी कंडक्ट आवरसेल्व्स, यू नो, रिस्पेक्टिंग अदर्स व्हाइल एट द सेम टाइम बीइंग इंडिपेंडेंट एंड बीइंग फियर्सली प्रोग्रेसिव. दिस इज व्हाट वी नीड टू बी. वी नीड टू बी फियर्सली प्रोग्रेसिव इन लाइफ फॉर एवरीथिंग. हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ, इसमें लिखा हुआ है ना, जब आप यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछते हो, यूनिवर्स को जवाब देना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनको सवाल पसंद है, उनको इंक्विजिटिव लोग पसंद है. तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आप लगातार पूछो कि क्या क्या और अच्छा हुआ था कल. क्वेश्चन पूछोगे, आंसर मिलेगा. सबकॉन्शियस माइंड को बहुत क्वेश्चन पसंद आते हैं,
ठीक है, तो अपने आप लगातार पूछ रहे रहो that universe, can I know how can I better myself? Universe, can you tell me that what is it that I need to change in my life so that I can see this victory? Universe, how can I have a fun day today? Universe, can you get me the most appropriate dress for me, you know, in this much budget, like less than 2,000 rupees? Universe, can we do this? How can I do this? So keep asking questions, you know, to the universe. You will keep getting the answers. अगर कोई बड़ा क्वेश्चन पूछना है, जैसे आपको शादी के लिए सपोज लाइफ पार्टनर के बारे में पूछना है कि इज दिस पर्सन राइट फॉर मी, शुड आई गो हेड एंड मैरी, बिकॉज कई बार होता है ना पता नहीं लगता और इमोशंस में आप सोए हो जाते हो एंड देन यू माइट गेट इनटू अ रॉन्ग रिलेशनशिप. सो आस्क इन द नाइट, रात को क्वेश्चन पूछ के सो दैट इज दिस पर्सन राइट फॉर मी टू बी मैरिड, यू नो, यू विल गेट द आंसर नेक्स्ट डे. और बहुत क्रिस्टल क्लियर यस एंड नो में आएगा आपके पास जवाब. यू नो, कोई बात कर रहा होगा या आप कहीं पे कुछ देखोगे बड़ा बड़ा नो लिखा हुआ, या फिर आप देखोगे अ नाइस कपल की फोटोग्राफ होल्डिंग हैंड्स एंड दे आर लुकिंग एट ईच अदर एंड हैप्पी टुगेदर. दैट मीन्स यूनिवर्स आपको आंसर दे रहा है दैट यस योर लाइफ इज विद दिस पर्सन एंड यू आर गोइंग टू बी हैप्पी विद दिस पर्सन. इस तरह को बिजनेस आपको शुरू करना है, उसके लिए क्वेश्चन पूछो, जरूर जवाब मिलेगा. खूब खूब क्वेश्चंस पूछो, अपनी जिंदगी भर लो क्वेश्चन से, सबके जवाब मिलते रहेंगे, है ना. किसी से और से पूछने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप से पूछेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से बड़ा और क्लियर कट जवाब कोई नहीं दे सकता. मैं दूंगी तो अपने ह्यूमन इमोशंस और अपने जजमेंट के बेसिस पे दूंगी, है ना, जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस उस बेसिस पे. जब सबकॉन्शियस माइंड कैन सी योर डेस्टिनेशन, सो उस हिसाब से जवाब मिलेगा किसी भी चीज के लिए. Even if it is as small as going to the doctor, ask the universe, can I go to this doctor? Will I be getting, okay, you know, this is what it is. So I saw these things so clearly when I was not well in the last 10-15 days. जब दिवाली के अगले दिन से I was not well. So I went to the doctor. I went to the hospital, which is like a proper full-blown hospital था. उसके emergency में, वहाँ पे emergency में resident doctor थे. उन्होंने मुझे, she's a female, a surgeon. She gave me the medications or whatever the prescription. But it was just not working. Like after taking for 2 days also, like मैं आज गई, कल मेरी नई तबीयत ठीक हुई उसकी वजह से, और फिर next day then I thought that okay, I'm just using my human brain too much. So then I thought that okay, universe, I need a very good medication for this and I have to up and about tomorrow morning, you know, like I'm not giving any more time. So can you take me to the best doctor? And there it was, Dr. Dheeraj Bhatia called me up for something. So he's the medical director of our organization, of the organization where I work. And he also has his own hospital and he's an advisor to the IMA. So he abruptly called me up for some reason, okay, for something else, because of some symposium. And then he said, क्या हो गया तेरी आवाज को, क्या हो गया तेरी आवाज को? मैंने कहा कि ये ऐसे चल रहा है. अच्छा लिख, प्रिस्क्रिप्शन लिख, फटाफट ले ले, आज शाम तक उठ के खड़ी हो जाएगी. You know, so this is how he talks. बहुत बड़े हैं वो उम्र में, तो मुझसे ऐसे ही बात करते हैं. क्या है, तू क्या कर रही है ऐसे, लाइक क्यों क्यों, कोई जरूरत नहीं सफर करने की, फटाफट लिख प्रिस्क्रिप्शन. तो उन्होंने मुझे 2 मेडिकेशन दी, मैंने उसी वक्त मंगवाई. And I was sorted. By evening, I was done, you know. So this is how universe answers. And then I was literally looking up and saying, thank you so much for answering prayers. You know, like universe made him call me. I was clueless as to how to go about it and whom to approach and where do I go. I was actually on Google looking for the best doctors near GK because that's where my office is and I was at work that day. So, but this is how life unfolds. The moment I asked the universe, it did not take 10 minutes by watch to answer my question or, you know, that question that I had asked. This is how life, so ask more things to yourself, जैसे इसमें लिखा हुआ है, और कल क्या हुआ था जो बहुत अच्छा था, आपको एकदम से जवाब आएगा. फिर आप पूछो और क्या हुआ था, और क्या हुआ था, then you get the answers. Okay, so keep doing that, keep communicating more in words, you know. कम से कम 15 मिनट तो पूरे दिन भर में वो निकालने ही होते हैं हमें मेडिटेशन के लिए. तो 15 मिनट बोलो कि ठीक है यूनिवर्स, अब मैंने सबसे बात कर ली, पूरे दिन सब कुछ बाहर सब कुछ कर लिया, अब हम आपसे बातें करने का टाइम आ गया है. तो अब यूनिवर्स से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें करो 15 मिनट मेडिटेट करके, और इनर वॉइस को ज्यादा सुनो. इनर वॉइस अब तभी सुनोगे जो बाहर की डिपेंडेंसी कम होती है. इनर वॉइस को सुनो. बहुत सारे ऐसे हंचेस, इंस्पिरेशंस, आइडियाज, कुछ ना कुछ आता रहेगा, उन पे एक्शन लो. Acting on inspirations and ideas and hunches is the biggest way to having a victorious life.
because it is coming because the universe can see your destination. Universe is paving the way for us, paving the path for us. So you walk on that path, जिसके बेसिस पे hunches आ रही है, inspirations आ रही हैं, और धीरे धीरे जब ये way of life बन जाता है तो आप fall कभी करोगे नहीं, क्योंकि हर चीज के लिए you are turning inwards and not outwards, while continue living in appreciation and gratitude all the time, irrespective of how big the challenge that you're facing in your life. This is only the way to actually live the life. And this is what we have learned in this entire book, because this happens to be the last chapter. So of course, like, this is something we need to learn, and be fiercely progressive in life. The path that you have to take, the milestone you need to achieve, the kind of money you need to receive every month in your wallet, to the way you are spending money, to where you want to reach in your life in terms of your health goal, relationship goal, this goal, that goal, whatever it is, So action is what we need to take all the time. So it is, like I shared with you yesterday, just repeating it. So till 31st of December, I have given myself some goals. Okay, money goals, health goals. And that health goals requires me to sweat it out like hell, within my schedule, within my, like periphery of working literally sometimes for 12 hours. I'm out at work because my job's like that. So all of that, and then so many travels and all of that. With that, if I decided that this is my health goal, so the way I'm sweating out in gym, I can't tell you. I mean, I can count my bones and muscles right now with the kind of sweating my trainer. And then I also wrote that my trainer is giving me the best training, that my body requires with my current level of fitness to make it what I want to be. So he's telling me exactly. So that's also affirmed, and that's scripted and decided that, my trainer is telling me the most appropriate training that I need to do to reach my health goal. Okay, so it is like, and then when I'm in the gym, every machine I bless, every move that I'm doing, like for my energy, for my body, for the music which is playing in the gym, to what the trainer is telling me. So उस trainer को भी हमने universe से capture करवा दिया है, जो हमको बता रहा है, because वो inspired होके मुझे वही बता रहा है जिसकी मुझे जरूरत है और जो मेरी capacity के within है. So yesterday he told me, no, you do it only with 2.5 kgs, so I was just doing my chest press. So he said, no, you do only with 2.5 kg. So he knows, because he's always been giving me 4 kilos for that, for the same workout. So मुझे यही पता लगा, मैंने कहा thank you universe, because he's making me do it according to my capacity right now, because I have not been into hardcore that sweaty training till now. I was running, I was doing, मेरे तो घर में ही सारे वो हैं weights and therabands and everything. So all of that, but then, yeah, I mean, like, this is, so all the goals that I've made in terms of the money goal, career goal, relationship goal, and my health goal, ये जो चारों areas होते हैं हमारे life के, ठीक है, ये चारों goal बनाए हैं, not waiting for 1st of January to happen, but did them on Sunday morning, a day when gym opens only for 3.5 hours. But then, because tomorrow never comes, and Sunday was the day when I was just back from Pune, I just sat and kind of streamlined my life a bit, and I thought that this is how I'm not wasting time talking too much on the phones, so because time मेरे पास बहुत limited होता है, तो मुझे उसको बहुत creatively use करना होता है. So सुबह बस ये यहाँ से session खत्म, I'm in the gym, and जो मेरे career goals हैं, वो career के time, जो office के time, वो सारे हो जाते हैं. So अपनी उन्हीं basis पे मैंने कल शाम को भी scripting करी है, तो मुझे बहुत clearly पता है कि मुझे इस area में क्या चाहिए इसमें. So life इतनी meaningful हो जाती है, while at the same time आप पूरे time appreciative mode में रहते हो. I'm always appreciative. आज तक दिमाग में कुछ बुरा नहीं आता है, अब तो बिल्कुल नहीं आता भी है, तो it is like out. I say that out of my life. That's out of my life. Cancel. Okay. Reject, accept. Reject, accept. ये चलता रहता है. ये करते रहना. Reject, accept. Yes, come. Good feeling. Yes, come. This is no, that's not right thing. Reject. So reject and accept. करते रहो and move forward, because of course selection criteria is very, very important. Yeah, that is how life is. So let's go to the other book, which is The Hero.
by Rhonda Byrne again. And we are reading the chapter on vision, how to have a clear-cut future vision towards life and how it should be. That's what we are studying. So yes, Shiba from US. Hey, good morning, everyone. Hi. Morning. Peter Foyo. People think you're an outright liar when you're visualizing because they think that's not happening, that's not here. Oh, yes, it is. Absolutely, it's here. Because if you can think it, it can happen. Once you have got good at visualizing the outcome of your dream in your mind, where you feel as though it has already happened, you can use the same technique for any smaller steps or goals you want to achieve on the hero's journey. But even if you only ever visualize the end results of what you want, your vision ensures that you will get there somehow, some way. Yeah, so it says that कभी कभी लगता है ना कि अगर आप किसी फ्यूचर के लिए बहुत ही डिस्टेंट गोल के लिए विजुलाइज कर रहे हो तो मन में ऐसा लगेगा ना कि इट्स नॉट इवन देयर, यू नो, व्हाई एम इमेजिनिंग समथिंग व्हिच इज सो अनरियल टू मी. कभी कभी ऐसा लग सकता है, नॉट दैट हमको लगता है, आई थिंक इससे रिलेट ही नहीं कर पा रही हूँ मैं. सो इट्स नॉट लाइक कभी कभी लगता है कि ओके, यू नो, हाउ विल दैट हैपन और समथिंग लाइक दैट, एंड दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू. मैं इतनी फेक हो रही हूँ. But no, fake it till you make it. This sentence is very important, you know. So whosoever had written this sentence, that fake it till you make it, that you have to learn, at least in your mind, you can be a millionaire. At least in your mind, you can have beautiful relationships. In your mind, you can have a flourishing and thriving business, which is giving you a turnover of 5 crores or whatever, 100 crores maybe. Okay, so whatever it is, so in your mind we can think that. So that's what he's saying, that, you know, aap kabhi kabhi lagta hai that's not happening and that's not here. So he says absolutely it is here. Agar aapne man mein soch le, to kehte hain na, success is created twice, once in your mind and one in reality. So create that success in your mind, tabhi wo reality mein create hoga. So that's what it says, that once you have got good at visualizing the outcome, to ab aapki matlab जो चीजें आप ना स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो. जैसे अगर जरूरी नहीं है कि आपको अगर आपको 10 करोड़ का टर्नओवर चाहिए हर क्वार्टर या हर साल या हर एवरी हाफ ईयरली, तो आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो. सो इंस्टेड ऑफ 10 करोड़ का टर्नओवर, अभी आप 1 पे फोकस करो, अगर आपका 1 पे भी नहीं है तो. तो दैट्स व्हाट ही सेज, दैट ईदर यू डू स्टेप बाय स्टेप. अगर आपको बहुत अनरियल लग रहा है अपना जो एंड गोल है, बहुत ही अनरियल लग रहा है, बहुत ही सो नॉट ट्रू लग रहा है, तो break it down into smaller goals. Okay, but it's absolutely okay. Like somebody, suppose if they want to reach their body weight goal of say 60 kilos, and you want to become 60 kgs, and that's what you've thought. So break it down into 5. So currently if you are at 80, you put your goal as 72 kilos. Okay, don't put 60, because 60 आपको बहुत ही far fetched लग रहा है. Maybe you were that 30 years earlier, तो आपको लग रहा है ओ अब कैसे होगा. लोगों के मन में ये होता है कि एक बार एक certain age आ जाती है, उसके बाद आपको वो weight नहीं attain होता. ठीक है, ये हमारा wrong notion and belief होता है. ऐसा कुछ नहीं होता. So it is like that. Like बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी एज में तो इतना ठीक है. I said no, there is nothing like age, because cellular age और chronological age अलग अलग होती है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है. So it is like break it down into a smaller goal, that you have reached this 72 kgs, which will sound very real to us, है ना, because 80 पे आप खड़े हो अभी, so 72 बहुत real लगेगा. 72 पे जब आप पहुंच गए तो आपका second goal 65 हो गया. So अब सारी एनर्जी आप 65 को दे रहे हो, that wow, this is my goal and this is where, wow, I'm very close to it. जैसे आप 65 पे आओगे, now you think about 60. So this is how you can break down your goals also, or your career goals, or whatever it is, like into smaller areas also. While he says that अगर आप हीरो की जर्नी में हो, but कोई बात नहीं, आपका अगर आपको एंड रिजल्ट ही विजुलाइज करना है वो 60 kgs, go ahead and do that also. You can do that, and but your hold that vision in your head all the time. You know, so that will ensure that you are getting there. Because जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, तो पूरी कायनात लग जाती है आपको अपने गोल को, अपना जो भी आपका सपना है उसको अचीव कराने में. दैट मीन्स कि ये जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, जो यूनिवर्सल फोर्सेस है, दे आर ऑलवेज, दे गेट एक्टिवेटेड द मोमेंट यू हैव
held a vision in your head, no matter what it is, no matter how impossible it might seem right now, but because your subconscious mind doesn't know right and wrong, right? It doesn't know true and false. अगर आप अपने आप को बोल रहे हो that my income is increasing by day and night, I can afford anything and everything, and money is constantly coming to me. अगर आप लगातार अपने आप को ये चीज बोल रहे हो, तो अपने आप वो चीजें, the whole universe is in action to help you achieve that goal. So this is how it actually works. Hanji. Liz Murray. Because my goal was straight A's, I went to the office in my school and I asked them to print out my transcripts. They said, "You just started. You don't have any." I said, "No, I want the blank ones." They printed it out with my name on it, and I sat in the staircase and wrote my grades in. I felt like they already existed in the future. I just had to catch up with it. When I did my homework, I would take out the straight A's I decided I would have and put them on the slides on the side so I could look at them when I was working. I really worked from a feeling that it was already real somewhere. In your life, you can use visualization for any situation you want to go well. You can visualize the outcome of exams, auditions, interviews, meetings, pitches, proposals, making a speech, meeting your in-laws, taking a trip, or your boss giving you the biggest raise in the history of your company. Make sure you visualize where you want to be at the end of this year and maintain a yearly vision with every new year. In addition, create a bigger vision of where you want to be 5 years from now. Just watch what happens with your life. Yeah, I'll just break it up, although this continues in the next paragraph. So here, Liz Murray says that she had decided the grades in the school already, that she's getting an A in all the subjects, and it happened. So which is like, and feel that you already are a winner in whatever it is. So इसमें जो ये लिखा हुआ है सारा, that in your life you can use visualization for all these things, for any life situation. That is what we do know in scripting. Scripting का मतलब यही होता है जो हमने full moon पे किया. I have used all of that in सबके लिए. So I visualized the outcome of the exam. So I study a lot. I keep doing different courses and I always get an A+. I have already decided, all of us have, in fact, so many. हमारे जो छोटे बच्चे आते हैं, I think evening sessions में, वो भी अपने grades को visualize करके, thank you बोल के, वो भी सब achieve करते जा रहे हैं. तो बच्चे भी सीख गए ये वाली चीज. So you can visualize the outcome of your exams, auditions, interviews, meetings, pitches, proposals, making a speech, meeting your in-laws, taking a trip, or your boss giving you the biggest raise in the history of your company. I have got that. The biggest raise in the history of my company, which is huge. You can't even imagine that. Okay. So these are the things that have happened in my life exactly the way I had envisioned. They are impossible, but it did happen. When COVID started, it was the month of April. That's when the magic book came. Like I practiced, I had read so many times earlier. I always had the magic book जब से वो release हुई है market में. But मैंने कभी भी इस तरीके से practice नहीं की थी. So, but जब COVID struck हुआ, or in April 2020 is the first time when decoded the magic book and started practicing. And that is the time when I said that my bank balance is doubling up. And believe me, not getting the salary for months together, my my bank balance doubled by June, mid of June. So can you imagine not getting the salary? It's not. So that means you can't strategize. We can't use human strategies.
अगर पहले ऐसे होता तो हम यही सोचते हैं ना कि सैलरी तो मिल नहीं रही है, ऑफिस बंद है, घर में बैठे हुए हैं, कहाँ से आएगा पैसा। लोगों मतलब मार्केट में भी इतना पैसा नहीं था ना, पीपल वर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स, पीपल वर नॉट पेइंग आगे बिकॉज उनको खुद को पीछे से पेमेंट्स नहीं आ रही थी. सो इट वाज लाइक दैट. No, but everything turned around because universe doesn't have that how to get it. We don't have to get into how. We just have to write, dream, visualize, and think about it. And you will have that. So many times, the meetings, the awards, everything. I mean, like, I've never prayed as such for an award or something. I mean, like, my own company giving me so many awards. That my wall has so many awards from my own company. But you don't know how it's coming, when it's coming, and who decides in the company that you're going to be awarded for your work. So there's someone always noticing. They're not coming from outside, you know. So it is like that. So life just turns around. Keep envisioning whatever it is that you want and never fall back on your dreams. Okay, so that is how it is. So Liz Murray says, make sure you visualize where you want to be at the end of this year, which I've kind of shared with you because I've done my own thing. And हमेशा ऐसा होता है कि मैं कुछ करती हूँ, उसके बाद I read the same thing, you know, and it happens to me on a daily basis that I've done something and I'll see that the same thing is written in the book. So I've already visualized where I want to be at the end of this year and maintain, and we are supposed to do that. So again, जब नया साल शुरू होगा 2024, तो हमको फिर से अपने ईयर के गोल्स बनाने हैं कि इस साल these are my victories and achievements, and thank you universe for giving them to me. And they have to be crystal clear. So then it says, in addition, create a bigger vision of where you want to be in the 5 years from now. Just watch what happens in your life. And then it says, watch out what happens in your life. Like that. Hanji. You've got to visualize where you're headed and be very clear about it. Take a Polaroid picture of where you're going to be in a few years. Unquote. Sarah Blakely, founder of Spanx. Yeah, so we have to actually take a Polaroid picture. That picture should always be that one still picture has to be there in our head all the time of where we want to be. So of course, visualization is done like the end goal, but also process visualization is there. If you want to see the whole process of how you're doing it, it's totally up to us how we want to do it. So yeah, I mean, like, so there was this lady who wanted to write a book, and she thought she wanted to get away from the city noise and everything. And she was living with her family there, but then she wanted to be alone to be able to write the book. And then she thought that I want to go to the countryside to write the book in nature, because that's how she felt that my mind would work better. And she would not be carrying her phone. She'll sit by the creek, by the riverside, and write her book and all that. So so there was a picture that was made that how she was visualizing, sitting by the window of a small cottage and all nature around her, serenity, absolutely calm. And then she got out and there was a sunlight coming on her face. So I saw that in motion picture, that sunlight coming on her face. And then she was walking on that trek towards the stream of river, and then there was a small bench kind of a place, like a rock bench. And there she sat and, she was just writing, looking at the nature, smiling at herself. And, then she imagined that, okay, then after writing, she came back during the lunchtime and then she made herself a coffee. Then the whole process of making a coffee, sitting by the window and still admiring the birds and the beauty and nature around. She was sipping her coffee, looking out of the window, having a smile on her head, like on her face. And then again, got back to writing the book. And then she saw that bestseller kind of a thing, that she got the bestseller award, that her book became the bestseller. So she visualized all that, and what happened as the result is that one of her friends from, Africa, I mean, someone she had met, like it was a very normal acquaintance, and that person called up and he said that, like I have a cottage now by that, it's a small village near so-and-so in UK, and I've got a small cottage there. And then she said that I was actually thinking about, going there alone and writing a book for about a few days, like 15-20 days. And he said, why don't you come and stay in my cottage? And she went, and that place was exactly what she had visualized,
and she's been visualizing. So when finally she was having that coffee, sitting by that window, looking at the nature and that little river and the birds chirping and lots of trees and the grasslands, everything was exactly what she's been doing. And she said that, wow, this is how visualization works. And her book became the bestseller because she had already, तो वो process visualization किया था उन्होंने end goal visualization नहीं किया था. तो दोनों तरह के visualization होते हैं. एक mental movie visualization होता है जिसमें आप पूरी movie देखते हो अपनी मतलब success story की कि कैसे how you got into making yourself a brand on who you are today. So your pura process visualization hota hai, aur dusra is end goal visualization, that you're just standing on the stage and you're receiving an award for your book to be, which has just become a bestseller, and New York Times has given it a bestseller, and you can hear the applause of people, the standing ovation, and like people coming and congratulating you, feeling the feel of the handshakes of so many different people, and appreciation that they're giving to you, that you've written such a mind-blowing book, maza aa gaya padh ke, and all of that. It was such a happy book, happy books. So happy books are what, like we, like that gives us a lot of deep sense of happiness inside us. So yeah, this is what it is like. So you can do end goal visualization, you can do process visualization. Both of them are very good. So this is something that I have recently seen somewhere, and then I saved it in my downloads. So I don't know whether I still have it. So I was watching it on my flight back from Pune as well, because it's there in the downloads. So always feel very good about it. This is, so let us use the process of visualization more, because these are the little gifts that the universe has given to us. Yes, we can continue reading. Shiba. John Paul DeJoria. I wake up in the morning and I just am. In other words, I don't turn on the TV. I don't get my cup of coffee. I don't do anything. I just sit there in bed and I just am. There are no decisions to make, no phone calls to make. Just for 5 minutes, I try and clear my mind, and I am in the here and now. This way your mind goes forth during the day uncluttered. And if you have a dream you're trying to achieve, in the last couple of minutes, you think a little bit about that and how much you want it, why you want it, and things you can do to help get closer to it. When you stop the franticness of the day before it starts, and you get your mind into a state of complete relaxation, the vision of your dream will slide straight into your subconscious mind. It's much like shutting down your computer to install a new update or program. Update can't be installed while your computer is running lots of other programs. And likewise, your subconscious mind can't receive your vision if your mind is on the run with other things. But when you shut down your mind through relaxation, your vision will be successfully installed. When you use visualization successfully, the people around you will wonder how it can be that all of a sudden everything is going your way and everything works out for you as though you're some kind of superhuman. And you will know that you're just using one of these simplest but most powerful abilities you were born with, and which is available to every human being on the planet. Yeah, this is so mesmerizing and so beautiful. And thank you so much, Sheba, for reading so beautifully. Thank you. Okay. So just decoding what's written here is something which is so beautiful. So what, John Paul DeJoria says is that I wake up in the morning and I meditate. That means I'm in the I am position, not what happened in the past, not what I have to do today, and not what I want to. I just am. I'm in the present moment with nothing, no attachments, nothing. And I sit for 5 minutes like that, thinking that I just am. This is my identity.
and mind is absolutely khali. There's no clutter, no noise, no planning going on. So 5 minutes, it is like that, which is called meditation. We're just focusing on your breath going in and a breath coming out. That's what we call as meditation. And then, ending that with some kind of an affirmation or vision or a goal that you want. This is what it's written here, that I think about whatever the goal is, or some affirmation, or that dream, or what is the most significant thing to be done during the day. And then further it says, I just take a couple of minutes to think about that, and I also think about, why you want it. Like, bit about, and how much you wanted. You really wanted badly. That's why you've been thinking about it. So 5 minutes of meditation, and then thinking about why you want. This is what I always tell you, that keep thinking about, why do you want that? Why do you want that 10 crores turnover? Because you want luxuries, you want travels, you want to help in different CSR activities, you want to help underprivileged people who can't go to school to fund their education. There's so much. You want to give employment to so many people so that they can also have a luxurious livelihood for themselves. So all of that. So think more about why you want to achieve that, and think how, ask yourself that, universe, please help me to get closer to this dream, because I really want to see myself out there. So this is what. So 5 minutes of meditation by just making an affirmation and thinking about the successful completion of the task, which could be your end goal or whatever. So that's what it says here. And then it says that, this is a way, jab aap mental relaxation mein hote ho, isme likha, it is like shutting off your computer and letting the updates get installed. So that जब भी updates and bug fixes होते हैं phone में, तो उसके बाद वो shutdown mode पे चला जाता है. Laptop पे भी updates install हो रहे होते हैं, तो उस वक्त आप operate नहीं कर सकते उसको, है ना? तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, that let the updates get installed and you will start getting the answers in a better version after that. And जब दिमाग शांत होता है, जब frantic चीजें नहीं चल रही होती है, तब हमको hunches and inspirations आते हैं. Universe always talks to us and communicates with us when the mind is clear, when it does not have too much of stuff going on in the head all the time. So whenever you're calm, whenever you're quiet, so in the morning you've connected for 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes is what Abraham Hicks says. So I do it for 15 minutes with a timer. So then there are thoughts which will come in your head, and take action on those, and they will never be wrong. So it says that even if something is going on, deliberately shut down your computer of the mind for a while. That is, meditate for a while. And then we will start receiving the vision. और लोग बोलते हैं ना कि आप इसमें यही चीज लिखी हुई है, which I always use, that, people say that, you will still at the end of the day remain a human being. No, you don't. You're actually born to be a superhuman, and we have all the traits to connect to the higher consciousness and have our life in such a way that, जैसे superhuman की life होती है. So this is what it says very clearly here, that when you use visualization successfully, the people around you will wonder how it can be that all of a sudden everything is going right in your life. Everything is going your way. So people will say that, you're lucky. No, nobody is lucky. Everybody's worked for it. I mean, if you see Shah Rukh Khan's interview, he always says कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि मैं जहाँ जाता हूँ लोग सराउंड होते हैं. मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि हर त्योहार वाले दिन, like thousands of people मेरे घर के नीचे सिर्फ मेरी एक झलक देखने के लिए खड़े रहते हैं. मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैंने ये सब विजुलाइज किया है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ लोगों की अटेंशन, मैगजीन्स वालों की वेटिंग लिस्ट मेरे लिए, मेरे इंटरव्यू के लिए. मैं वेट करता हूँ इन सब चीजों के लिए. मैंने विजुलाइज करके मैंने ये क्रिएट किया है, तो मुझे बुरा कैसे लगेगा? यही तो मेरा ड्रीम गोल था. शाहरुख खान अभी भी 1 हफ्ते में 1 बुक पढ़ते हैं, ठीक है? उनकी सबसे अच्छी, और उनका जो मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उनकी लाइब्रेरी में आप देखो तो यही सारी किताबें, विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, these kind of books is what he also reads. And उनका रिचुअल, अगर आप उनका डे का पूरा वो देखो, so he always reads before he goes to sleep, और ये अच्छी वाली जो बुक्स होती है जो हम पढ़ते हैं, so he reads them. So he's created. You can't say that Shah Rukh Khan is lucky. Have you seen the way he's worked on his visualization? Everything is on a silver platter for him. Looks like a silver platter. But उन्होंने अपनी success को already envision कर लिया था अपने दिमाग में. So this is how beautiful things are.
isn't it? जब अभी आलिया भट्ट को नेशनल अवार्ड मिला उनकी मूवी के लिए, तो उन्होंने भी यही कहा ना कि मैंने ये अवार्ड ऑलरेडी अपने दिमाग में रिसीव कर लिया था, मुझे पता था कि मुझे इस साल नेशनल अवार्ड मिलेगा, बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली विजुअलाइजिंग इट एंड कॉन्स्टेंटली गिविंग माई एक्सेप्टेंस स्पीच, and she knew what she was wearing, because national award we have to go wearing a sari. So she went in an Indian wear and all of that, you know. So there's so many people. Frida Pinto के इंटरव्यू में हमने पढ़ा था कि जब उन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर बनाई थी, तो वो बचपन से बस यही वो कर रही थी कि वो ऑस्कर अवार्ड मिल रहा है उनको, और उनको ऑस्कर अवार्ड मिला, और फर्स्ट मूवी के लिए मिला, जबकि वो तो बहुत एवरेज लुकिंग है, ऐसा नहीं है कि शी इज ग्रेट शेक्स और समथिंग, एंड इट वाज नॉट दैट एक्टिंग इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड. इफ यू सीन स्लमडॉग मिलियनेयर, she got her award for that in the first movie itself, because she knew that she's going to get it. उनकी सिस्टर का इंटरव्यू था, तो बोल रही थी पूरे टाइम बस ये शीशे के सामने खड़े होकर अपनी ऑस्कर अवार्ड की एक्सेप्टेंस स्पीच देती रहती थी. So this is how, you know, you recreate whatever you're thinking in your head all the time. So these are some real life people who are there around us who've used the same technique that's all mentioned here. So thinking more about, you know, your future prospects, your dreams, your vision, that is what. So people do think that we are some kind of human, superhuman, and, you know, luck is favoring us all the time. No, it's not that. We've created that success. So enjoy it at the end. You're going for any vacation, any trip, visualize what all you're doing. Visualize कि आप हंस हंस के गिर रहे हो सोफे पे बैठ के. विजुलाइज दैट आप ऐसी एक्सोटिक जगह पे जा रहे हो जहाँ की आपकी आंखें खुली है कि ओ माय गॉड, वाओ, दिस इज ब्यूटी, दिस इज नेचर. द काइंड ऑफ फन दैट you've had, the kind of places you've eaten, the kind of amazing exotic drinks that you've had, the kind of laughter and cheer and happy people around you, to the kind of group that you've met there. Everything can be visualized, you know, like everything before even making that trip. So this is the power of visualization and thinking about how you want it to be. And then it says that, and you will know that you're just using one of the simplest but most powerful abilities that you were born with, which is available to every human being on this planet. But people don't know about it. They are so hooked on to the past that they don't know that we can create the future our way. So this is how beautiful the life is. We have this equipment, gadget, you know, $1 million gadget inside us, this power, this technique of visualization, thinking, talking, writing, and imaging all those things that we want to achieve in our life, and the beauty of the subconscious mind that human beings don't know of, right? And using that and going ahead in our life. And well, I mean, like, let's just roll into the joy of life and savor every moment and create the kind of life that we want to. And that is how it is. So it adds so much of meaning, purpose, and fulfillment to our life, isn't it? Like life becomes so enriching जब हमको ये सारी अपने अंदर की powers को पता होता है. मतलब ये शक्ति है जो हमारे अंदर, हमको, we were so oblivious to it so far. I mean, we've heard about it, but इतनी डेप्थ में उसके बारे में सुबह सुबह 1 घंटा हम बात करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम डिकोड करते हैं, हम समझते हैं, हम अपने दिमाग में पेनिट्रेट करते हैं, और फिर पूरे दिन उसको एग्जीक्यूट करते हैं, है ना? कितनी अच्छी और मीनिंगफुल लाइफ है. Thanks to Rhonda Byrne. I think there's so much of gratitude coming for her having written all these wonderful books, and we are reading both the books written by her. Magic, of course, is a very, you know, like verb practice that you have to put into action. There are assignments, there are something. It is so beautiful to actually do them. I love the mirror work practice. When I went to take a shower, that was the first time when I actually sat and talked to myself in the mirror, and kind of really appreciated so many things about myself, you know, looking into the mirror. And I literally patted my back, and it was like, well done, Deepti, the way you're living your life, and the way, the kind of grit and fire you have towards making yourselves best, and, you know, like whatever it is that I've done, past achievements, future progression, all that. And then पूरे दिन जितनी भी बार शीशे के सामने गए, so thank you, I love you, Deepti, for who you are, and you're the best in the world. And, you know, like, this is how. So it was so much fun doing that. And then, you know, visualization. So the moment, you know, like, sometimes we become a human, but then we become a superhuman. Then again, we come back to becoming a human. We start thinking negative or something, and then we again go back to being a superhuman. So this toggle is going to go on all the time, which is okay. So this is how we progress. And then mostly we will learn to live in a very good aura, very good zone, very good energy eventually.
like so many of them do. When I read Rhonda Byrne's interviews, or Jack Canfield's, or Bob Proctor's, or Tony Robbins, when I see them, Vishen Lakhiani, when I hear them, like I feel that, oh, they have mastered the art of being in a grateful zone 24/7. So it's not luck favoring them that they are where they are. They have made themselves to become like that. So if they could do it, we can for sure. We already halfway through. So it's just that this is how we have to progress in life and enjoy and roll in that victory, in that, world, which looked so unreal to us at one point of time, considering कि मैं तो इतनी छोटी जगह पे रहती हूँ, कैसे होगा, मेरे पास तो family का भी support नहीं है. So no, it does not work like that. The universe doesn't see, it will create reasons for you to go there, and the pathway, it is going to carve the pathway for us. We don't have to do anything. We just have to think about that where we want to go. So rest everything, let the universe work its play. It loves working for us. Okay. So yeah, that is it for today. Thank you so much. Yeah. Anyone wants to share or add? Please make some noise, guys. I feel I'm not heard. मैम I आपका would like जिम to टाइम हो share. गया. मुझे भेज रहे हो आप? एक्चुअली मेरा नहीं जिम भेज नहीं रही हो, रिमाइंड कर. मैं तो चाहूंगी दिन भर मेरा आप मेरे एक्चुअली साथ जिम रहे. टाइम हो गया. Actually, hey Dipti, Shibha here. I can Yeah, Shiva. share a couple of things. Mm-hmm. So funny in a way. So one of my, not a dream list, I would say more call it a desire, was to get an Apple Watch by August of 2023 somehow. That's what I put it in writing. So fortunate or unfortunate, I got the Apple Watch because my company is going through some transformation. So my role was impacted, but I had so many points from the of the work, because of the work I'd done. I was able to buy the Apple Watch. So don't have a job, but I have my Apple Watch, which I put in this thing for August. And literally in August is when they told me, and I was like, okay, I need to kind of use the points and everything. Oh, and my camera is not on. So yeah, so got my watch. But You did share about it earlier when I was sharing about my watch, and you said that I've got the answer, that like I need to buy it because I was in a tussle whether to do it or whether not to do it. Right. Because I've always felt like, okay, why spend on it? Because I'm fond of watches. So I have I don't know how many watches, because I like colored bands. So I have like green, orange, purple, like white, black, brown. So I was like, okay, Apple Watch me, just have the strap. I don't want to change multiple of them. So I was like, okay, I'm not going to spend on it. But again, I got my watch in Wow. August. Which band is it right now? What color? Apple, I want that creamish rose gold, something like that. Light one. I'm not wearing it right The now, light but pink types, yeah. light pink types, yeah. Yeah. So- Great. Congratulations. Use that more for fitness. It tells you a lot. It tells you calm down, sit down, do this, do that, Right. stand up. You've been sitting for so long. So that's a Yeah. good thing about technology. Correct. Like in correct. office, suddenly I'm sitting and there would be like, stand up, I said, okay. So, and then I just stand up, I walk around, say, well done, bacha. It's like that. It's so beautiful. Yeah, so enjoying it, of course. Great. Congratulations. Thank Yes, you. Khushbu, you want to share? Yes, ma'am. Ma'am, so yesterday it was just like it's kind of sharing, I don't know, but yesterday I went to Gurudwara. So You went ऐसे ही to? वहाँ पे दर्शन I went to Gurudwara yesterday. Gurudwara, huh? Yeah. So I went there and दर्शन किए and अंदर एक उनका रूम है जहाँ पे सारे पाठी सब होते हैं and they read. So वहाँ पे मैं गई, they were like कि मैम आपको अरदास करानी है and मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वैसे, ठीक है कर दो. तो अरदास किया, उसके बाद they were like कि ठीक है. फिर वो मुझे बताते गए कि ऐसे 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 करो and then I followed him whatever he said. एंड फिर मुझे पता चला कि वो मतलब जो अंदर सुलाते हैं ना जो बेडरूम में, वो वहां पे उसकी पूरी तैयारी कर रहे थे. तो मेरे से सारी तैयारी कराई एंड देन वो बेडरूम में भी अंदर लेके जाना, तो फर्स्ट टाइम गुरु ग्रंथ साहब सिर पे रखना एंड अंदर लेके जाना, वो सब हुआ मेरे साथ.
एंड इट वाज नॉट अ प्लान, लेकिन हमेशा मेरे माइंड में था कि मुझे ये करना है, मुझे ये देखना है कि होता कैसे है। सो वो सारी चीजें हो गई एंड फिर मेरे से पूरा रेडी करवाया नेक्स्ट डे का भी, मॉर्निंग का सब कुछ। सो वो बहुत मुझे अच्छा लगा। वाह, जादू। तो वही मैं बोल रही थी कि देखो मेरे साथ मैजिक हो रहा है रोज रोज। तो द हाँ, मोमेंट इवन आई वाज डूइंग, मैं कंटिन्यूसली थैंक यू एंड वाहिगुरु कहती कि वाह मेरे साथ ये हो रहा है, बिकॉज मैं इतने टाइम से जा रही हूँ, कभी मुझे ऐसे बोला नहीं था। एंड कल के दिन सडनली मेरे को उन्होंने पूरा पूरा सब कुछ करा दिया। वाह, कंग्रेचुलेशंस। जादू से तो आपकी दुनिया सराबोर हो गई है ना। आई वाज वेरी हैप्पी जब आप कल हमारी ऑफिस के एलुमनाई मीट में बोले थे, एंड यू स्पोक सो वेल, एंड आई थिंक द मैक्सिमम क्वेश्चंस दैट वर थ्रोन वर टू यू ओनली. No one had so many questions after that. And all the questions तुमने इतनी स्माइल और इतने ग्रेस और इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आंसर किए, तो मुझे देख के ही लग रहा था हाँ खुशबू मेरा बच्चा है, मुझे पता लग गया. Because you were looking different in a crowd. So you were there, Yes. Tejal was there. So that's really amazing. Very good. मैं कल प्रिंसिपल मैम को पहले ही बोल दी, मैम मेरे को ना डर लग रहा है, कोई नहीं इसका मैं मैजिकल आउटकम कर देती हूँ, मैग्निफिसेंट आउटकम कर देती हूँ, कि बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से बोल दिया। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा बोला. Seriously, people were constantly asking you things, and then you could have been on the spot because of that, because couple of questions were like that, you know. So, but then yes, I mean the way you were actually answering them was amazing. So good. Yes, ma'am. Yes, Saroji. वो हंसने आई होंगी बस हेलो हमारे. गुड मॉर्निंग मैम कैमरा ऑन कर थैंक लीजिए. यू थैंक यू हंसी सो सुननी मच नहीं होती, देखनी भी होती है. मेरी शेयरिंग बड़ी अजीब सी है थोड़ी. कल मैं वो मतलब कुछ देर नीचे घूम रही हूँ और वॉक कर रही थी और चैंटिंग कर रही थी, तो एक लेडी अचानक से एक ग्रुप में से निकल के आती है वॉकिंग करते हुए ना, और वो मेरा हाथ पकड़ के ऐसे मुझे बोलती है, आप मुझे इतने अच्छे लगते हो कि पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा अट्रैक्शन सा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है मैं आपसे बात करूं. और उसने सच में मेरा ऐसे हाथ पकड़ लिया जैसे वो ग्रेटिट्यूड दे रही होती है ना. और कहते "हाँ, आप मुझे जब भी आप मुझे दिखते हो तो पता नहीं क्यों मैं आपकी तरफ इतनी अट्रैक्ट होती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो." So sweet. कितना वो करेज है कि वो आपको आके ऐसे बोल रही है ना. वही मैं उसको बिल्कुल नहीं जानती. मैं चैंटिंग करते हुए घूम रही थी मन में. अभी तक मेरी फ्रेंड नहीं आई थी, मैं वॉक के लिए उसकी वेट कर रही थी. मैं कहा चल तब तक चैंटिंग कर लेती हूँ. तो उसका इस तरह से बोलना ना, मतलब हाथ पकड़ के ऐसे बड़े ऐसे जैसे कि मैं कोई सेलिब्रिटी होती हूँ ना, इस तरह से. कह रही, आप मुझे जब दिखते हो ना पता नहीं क्या मैग्नेट है आप में, मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपसे बात करूं, आपसे वो वो करूं. आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं ऊपर ही रहती हूँ, इधर ही अपना फ्लैट का नाम बताया. तो वो बड़ी मतलब बड़ा वो था अजीब सा अभी और मुझे अच्छा भी वाला ऐसा ही एक्सपीरियंस लगता है था. आपके लिए. मुझे भी सेम टू सेम सरोजी, मुझे भी ऐसे ही लगता है. कि थोड़ा ऐसे कहते हैं आप. एक और मेरी फ्रेंड है, वो नीचे घूमती है, वो मुझे बोलती है, मुझे परसों बोलती कहती है, पता नहीं आपसे बात करके लगता है कि लाइफ में ना कोई डिफिकल्टी है ही नहीं है. कुछ नहीं है. कोई मैं आपको डिफिकल्टी शेयर करती हूँ और आप ऐसे सॉल्व कर देते हो, और बात करके ऐसे लगता है जैसे सब कुछ इजी इजी जा रहा है बड़ा. तो वो सब चीजें मेरे लिए बड़ी अच्छी थी, बहुत वैल्यूएबल थी. और जो प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ उसमें से कुछ कुछ चीजें ऐसी जो मेरी ड्रीम लिस्ट है, उसमें से कुछ कुछ चीजों की तरफ मैं जा रही हूँ. टाइम आने पे मैं शेयर करूंगी कि जो जो टिक मार्क हाँ, हो गए हैं. ठीक थैंक है यू. जी. थैंक यू सो मच सरोजी. थैंक वी यू. ऑल ऑल्सो लव यू सो मच. एक्चुअली थैंक आपका यू. प्रेजेंस बहुत इन्फेक्शियस है, और आपसे मिली जब मैं पहली बार, अभी जब यहाँ दिल्ली में पार्टी हुई थी, तो मुझे भी लगा दैट यू डिफरेंट एंड यू हैव अ डिफरेंट एनर्जी इन यू.
उसको आप कैप्चर करो और आप बहुत आगे जिंदगी में जाओगे और जाते ही जाओगे। आप में वो बात है। थैंक यू देखो मैम। लोग भी सड़क पे नोटिस कर रहे हैं ना, आपकी हाँ, एनर्जी वो चलते सड़क पे चलते, हाँ, नोटिस कर रहे हैं, रैंडम वैसे पीपल, हम जानते भी नहीं हो उनको। बिल्कुल So नहीं। yes, good, like ठीक है, that. So थैंक यू yes, मैम। you do have it in you. थैंक यू मैम, थैंक यू। Yeah, thank you. Yes, Deepa, we can quickly share, ठीक है? यस मैम। मैम गुड मॉर्निंग। Good मैम वो morning. हाँ वीडियो नहीं हो पाई। आई एम सॉरी बिकॉज आई एम तो ऑन द वे ऑफ एग्जाम। कल मैम मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो फिर लास्ट Oh, हाँ तो फिर मुझे शेयर कर। congratulations. हाँ थैंक यू मैम। तो फिर एग्जाम भी है, एनिवर्सरी भी है, तो फिर यूनिवर्स को बोल दिया कि आई वांट सेलिब्रेशन। ये मेरा, ये क्या आपने वो एक माइंड में रटा दिया कि माय लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, आई हैव फन वेयरएवर आई गो, व्हाटएवर आई डूइंग। तो फिर मैम 8 बजे पूरा सिलेबस खत्म हो गया। मैंने मेरे क्लाइंट के डाइट प्लान भी डिजाइन किए। फिर रात को 10:30 मेरे फैमिली के साथ हम आइसक्रीम खाने गए इस मौसम में, फिर हॉट ब्राउनी भी खाई। तो फिर पता नहीं मैम, पूरे काम तो हो जाते पूरे दिन के, पर कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन का आ जाता है। फिर मैम वो भी मेरा एक था कि मुझे कुक चाहिए। तो फिर एग्जाम के टाइम में मुझे मेरा अफर्मेशन था कि थैंक यू फॉर आई हैव, मुझे एक रेगुलर सपोर्टिव और अच्छी कुक मिल गई है। तो फिर वो भी एक कुक का हो गया। फिर मेरी डॉटर की मीटिंग थी, तो वहां पे मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम किया था कि सर वो भी जो भी वो डिस्कशन करे उसमें मुझे क्वेरी भी पता चले और हार्शी के कुछ प्रेज भी हो कि नहीं उसने अच्छा किया, अच्छा किया। तो एग्जैक्ट मैम ऐसी डिजाइन हुई। दिवाली के टाइम पे मेड चली गई थी, तो मैंने पहले तो ऐसा लगा कि ये क्यों चली गई है, क्या ये उसे नहीं पता मेरी एग्जाम है, उसको आ जाना चाहिए, वो कितनी लेट आई। फिर 1-2 दिन तो लगा, फिर रिवर्स किया कि नहीं ऐसा नहीं करना दीपा, यू आर ऑन द ग्रेटिट्यूड वॉक। तो फिर मैंने वो वहां पे वो 5 चीज अच्छी बोलनी शुरू की। तो फिर मैम वो आ भी गई और आके एकदम से वो उसका वो बिहेवियर भी, जैसे उसको लगा कि नहीं मैंने कुछ मिस्टेक की है, ऐसे मैं तो कुछ बोली नहीं, फिर भी वो ऐसे ट्रीट करने लगी। तो फिर मैम अमेजिंग, थैंक यू मैम। Yeah, सभी जगह thank पे you. जादू जादू है। Congratulations, and wish you and your husband a very happy wedding anniversary and lots of love, joy, laughter to penetrate your lives and हाँ togetherness. थैंक यू खूब मैम। grow करो, खूब progress करो, खूब खुश रहो. थैंक यू मैम। Yeah, thank you. Yes, Poonam. You can quickly share, then we get going. मेरी थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए मैं आज की जगह किसी और दिन करूँ, इफ यू हैव कल टाइम, कर बिकॉज दिस सकते इज हो? फॉर यू। हाँ, दिस कल फिर हम सिर्फ आपकी ले लेंगे. दिस इज फॉर यू। कल नहीं मैं कर सकती हूँ, आई हैव माय एजुकेटर कमिंग डे आफ्टर टुमारो एंड इट्स Tomorrow रियली you're not गुड। free? टुमारो आई एम नॉट फ्री, I'll do it day after अच्छा, tomorrow. Tomorrow my अच्छा, ठीक educator है. is coming home too. Okay. Okay. So it is for you. It is so wonderful. It is out of the word का मेरे लिए तो है। मैं अभी कर रही हूँ, छोटे से उसमें करती हूँ, अभी कर रही हूँ। ठीक है. Okay, I'm doing it now. Okay. Okay, you know, I'm on your practices and I know how I regard you, how I see you. Even if you're not there, even if I don't attend this, I have your voice and I feel your जो 3 आपकी powers, जो energies है वो मैं feel करती हूँ। उसी से ही related है ये। परसों की बात है, I called the day and of the day and सिर्फ मेरे को रात को dishes करने जाना होता है। जो मैंने खाना हम लोग ऊपर खाते हैं, मैं वो डिशेस करने गई हूँ, तो मैंने देखा कि मेरा ना किचन का टॉवल मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने अपना जो ड्रॉर खोला जिसमें टॉवल्स है, मुझे लगा कि मेरे पास टॉवल्स कम है, मैं अपने वाइट टॉवल्स लेके आती हूँ, मेरा काम घर से ही है और उसमें बहुत बड़े बड़े टॉवल्स, छोटे टॉवल्स डिफरेंट होते हैं। तो मुझे था कि मैं वाइट टॉवल किचन में हैंग करती हूँ, विच आई लाइक कलरफुल टॉवल्स। तो समहाउ वो डिशेस मैंने नहीं की, ड्रॉर खुला था, टॉवल मुझे अच्छा नहीं लगा जो हैंग कर रही थी, थोड़ा सा वॉर्न आउट लगा एंड आई डोंट यूज वॉर्न आउट चीजें। वो मैंने टॉवल निकाला, आई वेंट टू माय क्लिनिक, वहां पे मैंने अपना ड्रॉर खोले कि मैं कुछ 1-2 वाइट टॉवल्स लेके आती हूँ। ओके, मैं वो टॉवल्स ऊपर से भी निकाल लेती। व्हाट आई डिड, आई सेड इट्स बीन अ व्हाइल कि मैं ना डीक्लटरिंग कर रही हूँ, दिवाली पे भी करती हूँ कुछ। मैंने अपने टॉवल्स निकालने शुरू किए, उसमें से जो मुझे, मैंने सारे निकाले, ये वाला साइज, ये मैं क्लिनिक में नहीं यूज कर सकती, बट दिस आई कैन यूज इन माय किचन। कैन यू बिलीव इट, मैंने सारे टॉवल्स निकाले, उसको स्प्रेड आउट किया, मेरे को वहां से एक बंडल मिला जिसमें 3 लाख इंडियन रुपीस थे, जो कि मैं 2 साल पहले
मेरे आए थे यहाँ पे, जिसको मैंने अपने वर्किंग जो मेरा टेबल है जहाँ पे मैं कैश लेती हूँ, लिखती हूँ अपॉइंटमेंट्स, उसके ड्रॉर में मैंने रखे थे। उन्हीं दिनों आई हैड मेरा नेक्स्ट डोर नेबर, ये लोग मूव कर रहे थे, तो वो लोग हमारे घर में 1-2 हफ्ते रहे थे। उनका बेटा हु हैज हैबिट ऑफ स्टीलिंग, ड्रगिंग एंड एवरीथिंग। तो मेरे बेटे की काफी कैप्स मिस, अच्छा कुछ चीजें थी, मेरे पैसे, मैंने उसको एक बार ही पकड़ भी लिया कि उसने मेरे कैश में से पैसे निकाले, वो उसके पेरेंट्स को भी पता थे, तो उन्होंने वो वापस कर दिया। एंड आई थॉट, एंड बाय दैट टाइम दे वर मूव्ड व्हेन आई सॉ कि अच्छा मुझे ये लगा कि ओ माय गॉड, माय मनी इज गॉन, और मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकती, किसी को भी नहीं कर सकती, बिकॉज उसने ये किया था। तो आई हैड सिर्फ उसी पे ही डाउट था। एंड ओके, कटिंग इट शॉर्ट, 2 सालों में मैं ऊपर से टॉवल वॉश करती हूँ, वही जैसे वापस रखती हूँ, उसको मैंने पूरा करा ही नहीं। एंड आई फाउंड दैट मनी, दीप्ति जी, यू नो व्हाट, ऑल योर प्रैक्टिसेस, और दिवाली थोड़ा सा लंबा हो रहा है। मेरे पास एक टाइम एक मेरे बेडरूम में मंदिर होता था पूरा, उस मंदिर को निकाल के फिर मंदिर को छोटा करके मैंने अपने बेटे के रूम के बाहर, ऊपर हमारा एक फैमिली एरिया वहां रखा। तो किसी ने कहा कि आपके घर में कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं ऑन गोइंग, मंदिर कमरे में से निकाला, बाहर रखा, वहां से भी वो कहते मंदिर नहीं होना चाहिए, किसी ने बोला। एंड आई लिसन, अगर कोई मेरे को ज्ञान वाला बात करता है, मैंने मंदिर नीचे जाके अपने डाइनिंग टेबल पे एक छोटे से उसमें रखा है, बनाया है डाइनिंग टेबल, बड़ा डाइनिंग टेबल पे, मैं आपको दिखाऊंगी। आई एम बिकमिंग बिट ओके। दिवाली के दिन वहां पे एक और पीतल की बड़ी थाल आई जिसमें और सामान आया, और वो अभी वहीं पे पड़ा है। मेरे हस्बैंड ने उस दिवाली मंदिर को उठाने को भी नहीं कहा। वहां पे एक मेरे पास चांदी की छोटी सी ट्रे है जिस पर मैं चांदी के कॉइन्स रखती हूँ, जो मैंने परसों रात को वो कॉइन्स क्लियर करे, दिवाली हुए काफी दिन हो गए हैं, वो क्लियर करके वो वापस जगह पे रखे। वहां पर मैंने अपनी देवी माता की बुक रखी, जो मैंने पढ़नी बंद कर दी थी 1.5-2 साल से, जो वापस मेरी लाइफ में आ गई है, जिसको मैं सुबह शाम 3 चीज करती हूँ। अब वही मनी, वही नोट मेरे को, आई मीन इट्स सो ओवरवेलमिंग। मैं वही मनी मुझे मिली, वही मैं 2 टॉवल बाद में मैं लेके आई जो मुझे अच्छे नहीं लगे किचन में, मैं फिर वो वापस रखा है कि मुझे नहीं चाहिए। बट व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे लिए तो वो पैसे जा चुके थे, एंड वो unexpected money which was sitting there since the last more than 2.5 years, and I thought that, फिर मैंने उस बच्चे को, हो पोनो पोनो मेरी सिस्टर ने आज सुबह कहा कि उस बच्चे को भी कर दे कि हाँ उसने तेरी चीजें ली थी बट ये मनी वाज स्टिल देयर। जो आपकी प्रैक्टिसेस, रेगुलर प्रैक्टिसेस से इतने मैजिक्स हो रहे हैं, आई कांट टेल यू कि थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा ना एक चीज मैंने, आप हेल्थ उस बैकग्राउंड में है, मैंने आई एम वेरी बैलेंस्ड, मेरी आवाज कभी ऊपर नहीं जाती थी, कभी नीचे नहीं जाती थी, हैप्पी जोन में भी रहती हूँ सारा। पर अब मेरी ना थोड़ी एक्साइटमेंट थोड़ी सी ये आ जाती है जब मैं बात कर रही हूँ, आई डोंट नो, इट्स वेरी हैप्पी, सारा बड़ा पॉजिटिव, आई एम सो थैंकफुल, सब कुछ है, पूरा ग्रेटिट्यूड अपने मेंटर्स को दे रही हूँ, सब करती हूँ, पर मेरी हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाती है। ये हम बाद में आप मुझे बताइएगा कि सब पॉजिटिविटी है, ये शेयरिंग मैं बड़े अच्छे से आपको बताना चाहती थी, पता नहीं बता पाई हूँ या नहीं। इसके काफी पॉजिटिव्स मैं आपको, आई बात करते हुए ना थोड़ा सा ओवर होती हूँ, बट ये उन लोगों के लिए है कि कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस, अगर मनी की नहीं, इवन मैजिक स्टेप्स करिए। मेरे मैजिक स्टेप्स बहुत हो गए हैं। हाँ, और मैं एक मैजिक डस्ट, ये 2 मेरी प्रैक्टिसेस हैं जो ईच डे एवरी डे हो रही हैं। मैजिक डस्ट फॉर सो मेनी पीपल जिनको मैं मिलती हूँ, मैजिक स्टेप्स मेरे लिए हैं। जब भी मुझे होता है ना, ऑल इज वेल, वो आपने वो भेजी है, वो मैंने देखी हुई है, रोंडा बर्न की है या नहीं, उसकी जो 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 उसकी भी ऊपर है, रोंडा बर्न से ऊपर जो, नहीं, लुई से की मैंने ये पढ़ी है। ऑल इज वेल आप कीजिए। मेरा थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, डूइंग वेरी वेल, सब कुछ है, बट बैकग्राउंड में थोड़ी सी चीजें हैं जो मेरे को थोड़ी सी अब शेक करती हैं, विच वॉज नेवर एवर बिफोर, बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरे पास तीनों देवियों की वो शक्तियां हैं। पर ये छोटी सी चीज है, जब मैं बात करती हूँ आई गेट ओवर एक्साइटेड, मेरी हार्ट बीट बढ़ती है। बट ये शेयरिंग उन लोगों के लिए है कि जो मनी आपकी अनएक्सपेक्टेड है, जिसको अब जा चुकी है, बिल्कुल जा चुकी है। मैजिक स्टेप्स, शुक्राना लक्ष्मी माँ का, सरस्वती माँ का एंड दुर्गा का, जो मैं
जो हमारी मेंटर है, जो आपको दीप्ति मैम, जिसको मैं सुबह सुनती हूँ, तो मेरी उन 3 प्रैक्टिसेस ने सब कुछ जो पहले से था, बहुत कुछ हो रहा है अच्छा, मैं अब रख रही हूँ. आई एम गेटिंग ओवरवेल्म्ड. ओके, थैंक यू This सो is so मच. beautiful and thank you for sharing. And yes, we can see that. और आपका पैसा कहीं नहीं जाता, वो आप ही के पास रहेगा. And I'm so glad. बस वही है कि आप उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गई थी जहाँ पे आपको ये अनएक्सपेक्टेडली मिलना था. तो वही फ्रीक्वेंसी, वही वाइब्रेशन, ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी होती है. So you got it back. Congratulations. Enjoy your 3 lakh rupees. And this is a sample of the magic that's happening in your life, and you will be full of such samples because life is always full of magics and miracles, and you deserve the best in life. जो भी आपका challenge चल रहा है, so keep telling this to yourself that everything is always working out for me, and life is very beautiful, easy, and effortless. So everything will become like that. It's just that you need to tattoo this in your head, and I'm sure that everything will fall into place, and you will very soon share another victory with us in a big magnanimous way. So congratulations, and thank you for all your love and appreciation. I take it, but don't place me anywhere near God. I am human, maybe a superhuman like all of us. Today only we've studied that we are all superhuman. You connected me to my, you yourself. were a medium. You connected me to myself and to the powers I used to believe so much, but was shaken completely, was off. Yes. Thank you. So, thank you so much. Thank you, and God bless you with the best and with all your dreams and desires and success and love and whatever joys you want in your life. And thank you so much. So let's Thank get you going so much. and see you all tomorrow. Have a day, beautiful day, successful with lots of fun, joy, laughter. आप खुद खुश रहो और दूसरों खुशियां फैलाओ जहां पे भी आप हो. Thank you so much. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Beautiful classes every day. Learning. Thank you, ma'am.